Chiranjeev, welcome back for this general knowledge session. For this week's general knowledge, we have some of the words information that we will look into and see uh, what are some of the worldly facts and informations uh, that might be for the GK, right? So, सबसे पहले is seven wonders of the ancient world, right? So, um, actually, there are possibly seven wonders of the ancient world and then seven wonders of the modern world. जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड में फिर आपका ताजमहल आता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आती है एंड लेकिन वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो जो है स्पेसिफाइड है अभी फिलहाल, यानी कि किन किन जगहों पे आपको मिलता है, किन जगहों पे नहीं मिलता, कोई इनको मानता है एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो एशियन वर्ल्ड है, ये जो के साथ जो वंडर्स हैं ये इसमें मानते हैं। तो इसमें जो पहला है, अगेन सीक्वेंस डजंट मैटर, बट इसमें वन ऑफ देम इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, ठीक है, which is only wonder that is still standing today, and it's located in Egypt, and it's built around 2560 BCE. Now, what is BCE? This is before common era, right? तो इस पे हम बात करते हैं आगे, what does that this stands for, ठीक है जी। दूसरा है द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, said to have been built in the city of Babylon, now in modern day Iraq, ठीक है। जो कि पहले उसको बेबीलोन कहते थे, अब उसको इराक कहते हैं, which was built in around 600 BCE. Then we have Temple of Artemis at uh, Phesus, right? And it's located present Turkey, and it was constructed in the 6th century BCE, before Common Era. Then we have the statue of Zeus at Olympia. It's a giant statue of the Greek god Zeus, built in Olympia, Greece. ठीक है, ग्रीस इज वन ऑफ द कंट्री, तो उसकी एक जगह ओलंपिया पे देयर इज स्टैचू ऑफ ज़ेउस व्हिच वाज बिल्ट इन 5th century BCE. And then we have the mausoleum at Halicarnassus. It's actually a tomb which is in Turkey, and it was built in 4th century uh, before Common Era. And then we have Colossus of Rhodes. It's a giant statue of Greek god Helios, and it's built in Greek island of Rhodes. Rhodes, मतलब एक island है Rhodes. Rhodes is the name of uh, it's the name of an island in the 3rd century BCE. Then we have the lighthouse of Alexandria. It's the lighthouse built in Alexandria, which is in Egypt, and it was built in 3rd century BCE. ठीक है जी। So these were the ancient 7 wonders. For now, अब जो है what is AC and BC, ये जो होती हैं आपने कहाँ पे सुना होगा इसको, आपने सुना होगा डेट्स के साथ फैक्ट्स एंड स्टडीज में, यहाँ पे आप हिस्ट्री की बात पढ़ते हो। तो ACE, सॉरी, anyone wanted to talk? Okay, so ACE and BCE are two designations used to label years in the Gregorian calendar. Gregorian calendar, which is most widely used calendar system in the world today.
ग्रिगोरियन कैलेंडर में दो जो है हिस्टोरिकल डेट्स इस्तेमाल होती हैं, एक ACE एंड BCE, आफ्टर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। अच्छा, अब ACE स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनो इन लैटिन। लैटिन जुबान में ये होता है एनो डोमिनो, ACE, which translates to in the year of our Lord in English। ठीक है जी। इट इज यूज्ड टू रेफर टू द ईयर आफ्टर द ट्रेडिशनल, आफ्टर आफ्टर कॉमन एरा, आफ्टर द ट्रेडिशनल बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है जी। तो जीसस क्राइस्ट जो थे, उनके जो उनका जो बर्थ ईयर है, आ, उसके बाद, आफ्टर द, रेफर टू द ईयर से उनके बाद। Actually, why there is a difference for uh, एनो डोमिनो लाइक इट्स एडी, क्योंकि जो लेटिन जुबान होती है ना, उसमें वो बिल्कुल ये वाली एब्रीविएशन वो वाली नहीं है। मतलब लेटिन जुबान जो है, ये जो एब्रीविएशन है, ये इंग्लिश एब्रीविएशन है, लेकिन ये जो वर्डिंग है ना, ये लेटिन वाली वर्डिंग है। तो इसलिए आप इसको इंग्लिश में अगर इसकी स्टैंडिंग होगी वो यही होगी, आफ्टर कॉमन एरा। लेकिन अगर आप उसको उसमें कर रहे हैं लैटिन में, तो दैट विल बी एनो डोमिनो, एंड दिस इज आफ्टर आफ्टर द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, विच इज डेजिग्नेटेड एज अ ईयर वन, पहला ईयर। तो ACE उनके बाद का पहला ईयर इन दी ग्रिगोरियन कैलेंडर। BCE on the other hand stands for before the common era, before the common era, and is used to refer to years before the traditional birth year of Jesus Christ, which is designated as year one in the Gregorian calendar। तो यानी कि दो डेट्स हैं जो कि हम टाइम टाइम यूज करते आ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के बाद वाली डेट्स को ACE और पहली वाली डेट्स को BCE। तो ये ऐसे सब समझे कि हिस्टोरिकल डेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो टाइम पीरियड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद AM and PM, you might be knowing these, but still at times we confuse। So AM and PM are designations used to distinguish between two 12-hour periods of a day in a 12-hour clock system। There are 24 hours in a day। तो उस चीज को आसानी से समझने के लिए डिवाइड किया गया है 12-12 घंटों में। तो रात के 12 से लेके दोपहर के 11:59 तक AM होता है। एंड AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन इन लैटिन, विच मीन्स बिफोर नून, नून से पहले पहले। एंड refers to the time period, uh, refers to the period of time from midnight, रात के 12 से लेके to noon, like to 11:59 AM। तो जैसे ही दिन के 12 बज जाएंगे तो वो 12 PM हो जाएगा। एंड PM दिस पोस्ट मेरिडियन, which means afternoon, afternoon। So PM stands for post meridian in Latin, which means after noon, and refers to the time period of the time from noon to midnight, 12 PM to 11:59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59
59 PM। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है इट्स कॉल्ड PM। दोपहर 12 से लेके रात के 11 बज के 59 तक PM होता है। और फिर उसके बाद AM शुरू हो जाता है। आफ्टर वो जो होता है बिफोर नून होता है, एंटी मेरिडियम। ऑलराइट जी। नेक्स्ट वी हैव largest countries area wise. At least you must remember the uh, first two three countries or उनका area in million, so it will be good. So the largest is Russia, and it has 17 million kilometer square area. 17 million square kilometer. All right. And इस तरह then we have China, then Canada, sorry, and then China, then US, and then Brazil. So I would suggest at least you must be knowing first three, or even the US probably. These are the largest countries, 10 largest countries in terms of area wise. Then we have some of the general facts regarding the components of population change in the world in today's era. So we have one birth every 9 seconds. हर 9 सेकंड में there is a one birth of uh, for human being, and there is one death every 10 seconds. Kritika, we are like um, not sure कि इंदा है या नहीं इंदा, the question is, but we must be preparing at least. तो इसलिए मैं आपको अब ज़्यादा अब याद ना रखें, एटलीस्ट दो तीन आपको पता हो, या ये पता हो कि भाई विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आपको रशिया, या अगर आपको ये वर्डिंग्स ना भी हो, नंबर्स ना भी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन है, या ये पता होना चाहिए विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इट हैज टू बी ब्राजील। नंबर्स को हम छोड़ सकते हैं। यस। सो पॉपुलेशन चेंज में जनरल फैक्ट्स हम पढ़ रहे थे। सो देयर इज वन बर्थ इन एवरी 9 seconds, देयर इज वन डेथ इन एवरी 10 seconds, एंड देयर इज वन इंटरनेशनल माइग्रेंट इन 32 seconds। इंटरनेशनल माइग्रेंट क्या होते हैं? Anyone? What is international migrant? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर द ट्रेवलर्स जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री से ट्रेवल करते रहते हैं। लेट से अगर इंडिया से एक कोई बंदा पाकिस्तान आए, तो विच इज तो इट वुड कॉल एज इंटरनेशनल माइग्रेंट। लेकिन उसमें एक होते हैं विजिटर, एक होते हैं माइग्रेंट। माइग्रेंट वो होते हैं जो रहने के लिए आए, परमानेंट स्टे। एक होते हैं विजिटर्स जो आके चले जाते हैं, दैट आर नॉट माइग्रेंट, राइट। तो उसका जो रेट है दैट इज 32 seconds। और जो माइग्रेंट्स होते हैं वो भी पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं। तो पॉपुलेशन इज नॉट जस्ट ऑन birth rates, but it's also on the people coming from other countries. Uh, I'm coming to this. I'm coming to this. And these are the largest countries by population. And China is the number one for now.
and it has India uh, at the second spot. But in the future, India is going to surpass China in 2020, 2030 probably, as researchers say that India will become the most populated country in the world. And then we have US as number three, Indonesia, and then Pakistan, and then Nigeria, Brazil, Bangladesh, Russia, Mexico. So these are some of the countries, top 10 countries with the highest population.